कश्मीर जो कि जाना जाता था अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी टूरिज्म के लिए, आजकल वो कश्मीर फाइल्स जो एक मूवी आई है, उसकी वजह से भी काफी चर्चा में है। कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए 1990 में, इस मूवी में उनको हाईलाइट किया गया है। काफी इसको सपोर्ट मिला है मूवी को, ऑपोजिशन भी मिला है कि कई लोग चाहते हैं कि ये मूवी को बैन कर देना चाहिए। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ न्यूज फ्रंट के साथ हैं राजेश तलवार जी, जिन्होंने कश्मीर पर एक बहुत ही फिक्शन नॉवल लिखा है, काश कश्मीर, जिसमें 2 लोगों की कहानी है। तो कश्मीर पे हम उनकी राय जानना चाहते हैं, कश्मीर फाइल्स पे उनकी राय जानना चाहते हैं। वो क्या सोचते हैं कि इस मूवी में जो तथ्य दिखाए हैं, जो फैक्ट्स दिखाए हैं, वो करेक्ट है या इस मूवी को बैन कर देना चाहिए। वेलकम राजेश तलवार जी। Thank you, Alka. It's very nice to be with an independent channel such as yours. आजकल the debate has become so polarized. कोई एक तरफ है, कोई दूसरी तरफ है। आज सुबह मिस्टर केजरीवाल कुछ कह रहे थे कि ये सब झूठ लिखा हुआ है, और कुछ दिन पहले हमने सीन्स देखे जहां हॉल्स में लोग रो रहे थे। मैंने पाकिस्तान के वीडियोस देखे जहां पाकिस्तानी रो रहे थे कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि कश्मीर में ऐसी माइनॉरिटीज के साथ ऐसी ट्रीटमेंट की गई है। सो यू राइट, मैं इस मुद्दे से कुछ देरी से देख रहा था, और मेरा भी ख्याल था कि कश्मीरी पंडित्स की जो मिसफॉर्चून्स हुई हैं, जो ट्रेजेडी हुई है, जो जेनोसाइड हुआ है, जो फोर्स्ड एक्सपल्शन हुआ है, इट हैज नॉट बीन हाईलाइटेड। तो ये मेरी जो किताब है, वो मैं कुछ प्रोड्यूसर्स से इन टच भी था, लेकिन आफ्टर अ फ्यू engagements I realized कि उस समय people did not want to make a film to really highlight the Kashmiri Pandit issue. So in that sense, I feel that I welcome the movie. I think it's a great effort, and I think I have seen it, I have enjoyed it, and I understand that it was a very important film that needed to be made. अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये और पर्सपेक्टिव्स नहीं दिखाता. It doesn't show what happened to other minorities. It doesn't show what happened to moderate Muslims who tried to protest the extremism that was around. वो बात सही है, but जरूरी नहीं है कि एक फिल्म सारी चीजें दिखाए. I mean, otherwise that will be a kind of hypocrisy. Because if you remember a few years ago, Haider was made. उस समय तो किसी ने कहा कि भाई हैदर पंडितों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा, हैदर और माइनॉरिटीज के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा. So I think the Kashmir Files has done a great service to the nation. It has spread the word. A few days ago, Amitabh Bachchan had said that we know now what we did not know then. And for that, he was trolled, I think, unfairly. Because a lot of people, and that's why people are flooding to the halls, because a lot of people, millions and millions of people did not know that this had happened. And I think it was a great tragedy. It's terrible. Movie should have been made. There can be other movies which show other perspectives. There have been made other movies. For example, Haider showed the other perspective. There can be future movies which show other perspectives. लेकिन जैसे एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, मैं तो ह्यूमन राइट्स और लॉ के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ. तो हमारी कोर्ट्स में, अदालतों में एक कहा जाता है कि जब कोई बहुत बड़े क्राइम होता है तो जज को, जूरी को, ऑडियंस को, सबके सामने एक विक्टिम स्टेटमेंट प्रोड्यूस की जाती है, जहां विक्टिम अपना पर्सपेक्टिव बताता है कि भाई मेरे साथ ये बीता. अब उसमें ये नहीं देखते कि किलर की क्या मजबूरियां थी, किलर की क्या कंपल्शंस थे. इट इज जस्ट अ विक्टिम स्टेटमेंट. सो आई ट्रीट कश्मीर फाइल्स लाइक दैट kind of a victim statement, that it needed to be made. It's a terrible anguish they suffered, and the nation is weeping. When people are going to the halls, they are sharing कि हमें तो पता ही नहीं था आपके साथ ये जुल्म हुआ, आपके साथ ऐसा हुआ. Pakistanis, sensitive Pakistanis, they have been crying. And so I think
It's wonderful. Having said that, I think the sleeping conscience of the nation has been roused to an extent, but this should not give rise to a communal tension, which so far I don't think there have been such incidents. We have to be careful because कुछ पागल लोग तो हैं ही, लेकिन सच तो बताना पड़ेगा. Kind of, targeting it towards, that communal road, I guess. I mean, somewhere, because there have been instances where people have stopped screening of other movies and, asking the cinema hall to just, play the Kashmiri Files rather than any other movie. So it's just radicalism. Don't you think it's firing this movie? I think that is very unfortunate. It's a very unfortunate dimension. लेकिन देखिए, for example, among the Mughals, I am a great admirer of Akbar, but I also feel that Aurangzeb was a great villain. और तो अगर औरंगजेब रोड आपने बदल दिया, उसमें कोई एतराज मुझे नहीं है, लेकिन you have to do it sensitively. औरंगजेब रोड हटाया और आपने फिर उसका नाम रख दिया अबुल कलाम आजाद, so that the Muslims don't feel offended. That is handling the issue with sensitivity, and that is worthwhile. So अब कुछ लोग हैं वो misuse करेंगे, वो अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस फिल्म को इस्तेमाल करेंगे, and that is very very unfortunate, because मैं तो समझता हूँ कि अगर आप कहें कि there were Kashmiri Muslims who were culpable, there were also Kashmiri Muslim moderates who suffered, and I would say the Hindus of the nation, we are also hugely culpable. In fact, इतने सारे लोग गए हैं सिनेमा हॉल में because we feel ashamed. There are people who feel ashamed कि भाई हमने अपने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया. ये लोग आते थे हमारे घर, भीख मांगते थे, रेफ्यूजी कैंप्स में रहते थे, हमने इनके लिए कुछ नहीं सोचा, मैंने तो सोचा ही नहीं कि इनकी कितनी सफरिंग हुई है. So it's a national shame, and the Hindus should also feel as ashamed as anybody else, because ये आपके लोग थे, आपने कुछ नहीं किया. The politicians, and I think politicians across all political parties, अब एक दूसरे का नारा खींच रहे हैं. हाँ, एक दूसरे का नारा खींच रहे हैं. बीजेपी कांग्रेस को कह रही है आप जिम्मेवार हैं, कांग्रेस कह रही है बीजेपी आप लोगों ने सपोर्ट की हुई थी, आपकी वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, और अब्दुल्ला आर सेइंग समथिंग एल्स. अरे यार, एक दूसरे का मत खींचो. इट वाज अ कलेक्टिव, एक्सेप्ट द कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कि इतनी शेमफुल बात हुई और अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम किसी ने कुछ नहीं किया. Nobody cared. It's very shameful. And also there is another question which arises, and that is कि भाई आगे आप क्या करेंगे? बस ये फिल्म बन गई, सबने रो लिया. Is that the end of the matter? Are you going to do anything for the Kashmiri Pandits? Are you going to rehabilitate them? इतने सालों से ये चलता आ रहा है. और ये आप देखिए कि जो कश्मीरी पंडित्स वहां छोड़ के गए, जो भी संख्या थी, 500,000, 500,000, 600,000, अगर वो वहां होते, उनके बच्चे होते, उनके बच्चों के बच्चे होते जो वहीं पे पैदा होते, अब वो दूसरे एरियाज में पैदा हो रहे हैं. So if you talk also about the rehabilitation, it is not that only the Kashmiris जो अपने घर छोड़ के गए थे उनको आप वापस भेजें. उनकी जो औलादें हैं, उनकी जो औलादों की औलादें हैं, उन सबको आप वापस भेजिए, providing them necessary security, overseeing the thing. और इस बात पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. मैं तो समझता हूँ if you want to contest elections in the Kashmir tomorrow, no political party can refuse that the Kashmiri Pandits have to come back. Everybody has to accept. If you refuse, you will not be allowed to contest elections, because that you are going against, किसी के साथ genocide हुआ है, किसी के साथ forced expulsion हुआ है. How can you have an agenda that इन लोगों को वापस नहीं लिया जा सकता? So that is, the only thing is how it has to be managed. You have to have a commissioner for resettlement of refugees with a cabinet level rank. You have to give him all the infrastructure. You have to throw all the kind of money you need to make this workable. I mean, इतने सालों से देखा आरिफ मोहम्मद खान या कोई और कह रहे थे कि Kashmir gets 7 times the central budget as compared to other states. But we have nothing to show for it because Kashmir has been full of corruption, awash with corruption, which nothing. So if so much money has been spent some money
start Mr. Modi ने फिल्म की बड़ी तारीफ की, but it should not remain at the level of a political agenda. I appreciate Mr. Modi for appreciating the movie, but now he has to walk the talk. The Kashmiri Pandits must get justice. क्योंकि आप अगर क्रिमिनल ट्रायल पे भी देखिए, एक विक्टिम स्टेटमेंट होता है. मैं समझता हूँ कि दिस मूवी वाज लाइक अ विक्टिम स्टेटमेंट, यू नो, कि आपने विक्टिम स्टेटमेंट सबके सामने, नेशन के सामने रख दिया. दिस वाज द सफरिंग, दिस वाज द जेनोसाइड, दिस वाज द एक्सपल्शन. लेकिन विक्टिम स्टेटमेंट इज नॉट इनफ. उसके बाद फिर कोर्ट कहता है व्हाट इज द कॉम्पेंसेशन, व्हाट आर द रेपरेशंस. अब इसकी पनिशमेंट क्या होगी? इज इट पॉसिबल टू पनिश दोज पीपल? या सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने हाथ ऊपर कर दिए थे कि अब इट्स टू लेट. Is it possible? If it's not possible, how are you going to do the reparations? How are you going to? At that time, there was no investigation done. Even at that time, no investigation was done. Well, that time it was not done. So, you know, a very important part of the trial के victim को अपनी statement देने का भी हक है. But after that, after he says that statement, there is a kind of therapy that happens. The victim feels कि लोगों ने मेरी बात सुनी, मैंने बताया मेरे साथ क्या जुल्म हुआ. But after that, he also wants the satisfaction to see कि जिन लोगों ने अत्याचार किया उसकी families के साथ, उनकी wives, उनकी brothers, उनके fathers, that they should be punished. And then that may or not be possible, unfortunately, because of the collective culpable irresponsibility across political parties, across even the media, you know, which the media का भी जिम्मेवारी थी उस समय कि वो बात करते. हैदर की बड़ी तारीफें हुई कि हैदर में ये दिखाया है, वो दिखाया है. So we project ourselves as a kind of, देखिए हम कितने liberal हैं. So in that sense, even the criticism made in Kashmir Files, there are grounds for saying that, you know, this is part of an ultra liberal agenda. देखिए अगर ये लोग जाते हैं, जो लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, अमेरिका जाते हैं कि कश्मीरी फ्रीडम की बात करते हैं, तो they can't talk about Mexico's freedom in America. They will be hounded. मेक्सिको को कैसे उन्होंने सीज कर दिया, वो बात करें कि भाई आप मेक्सिको को फ्री कर दें. Nobody is going to listen to that. So for all these people, just to take the fashionable point of view, you know, to weep tears. And एक और बात है, वो ये है कि अगर आप कोई भी एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट, पहले तो प्रैक्टिकल ही नहीं है. प्रैक्टिकल नहीं होने की कई कारण है. कश्मीर cannot be assembled back together. The only reason why Pakistan has been supporting the freedom movements, inverted commas, is actually they wanted to be annexed to Kashmir. Yes, Pakistani Kashmir, and they wanted to be part of Pakistan. So they are not interested in independence. Independence is not going to happen. And Pakistan का सबसे बड़ा दुख है जो उनकी military forces, because is that हमने पाकिस्तान की breakup में assist किया. It was a moral cause. We assisted, but they lost half their country, more than half their population. Bangladesh का population ज़्यादा थी. After that, it almost just instigated. So for them, their agenda for the extreme military, they say कि इन्होंने हमारे टुकड़े किए, हम इसका सर काट देंगे. And for them, Kashmir is that sar. So and also it gives a kind of legitimacy to the military in Pakistan. कि भाई आप लोग पूछेंगे. So actually, I have also welcomed 370, because 370 actually you know, removes discrimination against all kinds of other minorities also. हम बात करते हैं कश्मीरी पंडित्स की, सिर्फ वही एक माइनॉरिटी नहीं है. आप ये भी कह सकते हैं कि भाई दूसरी माइनॉरिटीज पे जो जुल्म हुआ है वो क्यों नहीं दिखाए. मसलन आप मेरा केस लीजिए. मेरी फैमिली आई थी पाकिस्तान से पार्टीशन के टाइम, दिल्ली में बस गए. बहुत सारे फैमिली जो हैं वो कश्मीर गए. बिफोर टिल 370 was introduced, those families who have been staying there, उनको residency rights नहीं थे. Okay. So 370 has, you know, given them residency rights. If you see the Gurkhas were celebrating कि 370 हटा दिया, because Gurkhas who were ancestors were part of the king's army. They did not have residency rights. If you look at the Shias, you know, लोग बात करते हैं discrimination की,
तो पाकिस्तानी में तो सुन्नी शिया राइट्स होते रहते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते, मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं, लेकिन कश्मीर में the Shias feel insecure. There are Shias who have left Srinagar because they feel they have been targeted by the Sunni majority. So all these things are there. I would say I welcome the film. It's a great thing that this film was made. लेकिन वो जैसे पोएट्री है कि कुछ निकलना चाहिए सब कुछ से, कुछ गंगा निकलनी चाहिए, कुछ it will be such a huge achievement. The government should take it as a challenge. If it benefits the Kashmiri Pandits in true sense, then it will be worth, yes, making of it. Yeah, absolutely. Okay. Absolutely. I feel really sad that it has taken so long for the victim statement to come out, but I'm very pleased that it has come out, and I think इसमें आप मूवी को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एंटी मुस्लिम हो, और आप मूवी को ना पसंद करते हैं, it does not mean anything also. It was a story that needed to be told, and I think people are flooding the halls. It is breaking records because we are being told, we are being educated, we are watching the film and we are saying, ये हमारे साथ हुआ. You know, Jai Prakash Narayan used to say कि total revolution तब होगा जब body के एक हिस्से में दर्द हो और बाकी सब brain को समझ आ जाए कि यहाँ पे तकलीफ है, मैं इसका इलाज करूँ. So whether or not that total revolution is possible, but Kashmir में जो जुल्म हुआ, the nation was so grossly insensitive, the media was so grossly insensitive. It's just terrible. Yeah. So, the kind of statements the director and filmmaker is making, and even Pallavi Joshi, like recently she has said that we will also make Ajmer Files, and then you will know what kind of atrocities Hindus are facing. So don't you think it's just kind of polarizing the country? Yes, I think that is unfortunate. अब ये क्या है कि लोगों को when things become polarized, तो लोग एक कैंप में घुस जाते हैं. So although I welcome the film itself, but it does not mean that I welcome whatever Mr. Agnihotri may be saying or Mr. Pallavi may be saying about other incidents, and I don't think it should be brought out like a Hindu-Muslim narrative. At the same time, I think it's very sad that Kejriwal should be saying, ये सब झूठ है, ये झूठ नहीं है, ये सच है. Of course. So, and should have been better that instead of sensationalizing, they would have sensitized the audience of today, which is I guess it's not happening. Maybe that's why there's a lot of friction among all the camps, be it left or be it right. Well, one thing I see that instead of talking about future movies that are going to be made, let's not leave it at the issue of movies, because then you're just, okay, कौन सी movie blockbuster होगी, इसका अंजाम क्या होगा, इसका follow up action क्या होगा. मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया कि फिल्म की तारीफ की, लेकिन मोदी साहब अब आप करेंगे क्या? आप 370 को लाए, उसकी भी मैं तारीफ करता हूं कि बहुत जरूरी था, लेकिन let's have some concrete action to get the Kashmiri Pandits the justice, because this is a very partial justice which they have got, a victim statement. It is something they need much more. तो इतने सारे हजारों लोग, इतनी suffering रही, और वापस नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? Those things are there. Yes. Okay. Thank you so much, Mr. Rajesh. Thanks so much, for the Alka. insight, and it's really nice to hear someone talking so unbiasedly about this whole issue.